Good morning, everyone. Now, coordination components. Okay. And now today's topic is nomenclature of coordination components. ठीक है, nomenclature of coordination compound. Now we know the meaning of nomenclature. ठीक है, जब किसी चीज को हम क्या करते हैं, when we assign the name, ठीक है, to any compound that is known as the nomenclature. हम उसको nomenclature की कैटेगरी में रखते हैं. So coordination compound find utility in industry, agriculture. ठीक है, coordination compound find utility in industry, ठीक है, agriculture and also in the field of medicine and also in the field of medicines. ठीक है, so these compounds have been assigned chemical formula. ठीक है, these compounds have been assigned chemical formula known as IUPAC names. Known as IUPAC names. ठीक है, these are known as IUPAC names. Now IUPAC is International Union of Pure and Applied Chemistry. ठीक है, तो अगर आप केमिकल फॉर्मूला दे रहे हैं, so we are giving them the IUPAC name. ठीक है, यहाँ पे हम ट्राइबल नेम पे नहीं जाएंगे. ठीक है, we have already study about the IUPAC nomenclature or the IUPAC name. ठीक है, so under this heading, the first topic is writing formula of mononuclear coordination entity. Writing formula of mononuclear coordination entity. Writing formula of mononuclear coordination entity. ठीक है, किसका लिखना है हमें? मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, सो अ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, अ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटी. ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज species in square bracket. इसकी बात हम कर रहे हैं. मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटी that is species in square bracket contains a single central metal atom. Contains a single central metal atom. The chemical formula of these entities are based on the following guidelines. Based on the following guidelines. ठीक है, so there are certain rules. The first rule is
first rule. The central metal atom is listed first. The central metal atom is listed first. Okay, this is the first rule. This is the first guideline. Okay. The second is the ligands present are written or listed ठीक है in alphabetical order, written or listed in alphabetical order without taking into account any charge if present on them. Any charge if present on them. ठीक है. Third guideline is the same sequence is followed in this is the third guideline. The same sequence is followed in polydentate ligand. Okay. Now the next is the formula of the coordination entity. The formula of the coordination entity including the central metal atom and all the ligands. Including the central metal atom and all the ligands are enclosed in square bracket. They are enclosed in square bracket. ठीक है. Now the next rule is the fifth rule is in the coordination sphere. Or coordination entity, ठीक है, there should be no space in between the ligands and central metal atom. Here there is no space in between the ligand and the central metal atom. This is the next guideline or the next rule. Now the last one is in case of the coordination entity. In case of the coordination entity is mentioned without any counter ions. Is mentioned without any counter ion. Its charge, if any, अगर present है तो, its charge, if any, is written outside the square bracket. The charge is always written outside the square bracket as a right superscript. As a right superscript with a number before the sign.
the number before the sign. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव AGNH3 होल 5. ठीक है, हाउ टू मेंशन द चार्ट? इट इज रिटन एज द सुपरस्क्रिप्ट. सुपरस्क्रिप्ट हमेशा कहाँ लगता है? ऊपर लगता है. सबस्क्रिप्ट कहाँ लगता है? नीचे लगता है. ठीक है, सो चार्ज इज मेंशन्ड एज द सुपरस्क्रिप्ट एंड नंबर बिफोर इट. यू हैव टू मेंशन द नंबर, कितना चार्ज प्रेजेंट है. ठीक है, यू हैव टू मेंशन द नंबर बिफोर द चार्ट. फॉर एग्जाम्पल 2+. ठीक है, तो दिस इज द मेथड व्हेन द चार्ज इज प्रेजेंट. ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे जब क्या प्रेजेंट होगा? चार्ज प्रेजेंट होगा. क्लियर हो गया? नाउ इफ द नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल FeCO होल 5 2-. ठीक है, सो टू रिप्रेजेंट द चार्ज दिस इज द मेथड, दिस इज द रूल. हाउ टू राइट द फॉर्मूला. फॉर्मूले को लिखने का रूल अभी हम देख रहे थे कि कहाँ पे सेंट्रल मेटल आएगा, एटम आएगा, वेयर द लिगेंड इज प्रेजेंट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन आएगा, चार्ज, इफ द चार्ज इज प्रेजेंट तो चार्ज कहाँ पे आप लिखोगे. ठीक है, कितना चार्ज प्रेजेंट है, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो उसको आप कहाँ मेंशन करेंगे? इट इज मेंशन बिफोर द साइन. कन्वेंशन से आगे आप उसको क्या करोगे? उस नंबर को मेंशन करेंगे. ठीक है, सो दीज आर द formula, these are the guidelines to write down the formula of a mononuclear coordination compound or mononuclear coordination entity को लिखने का formula. These are the guidelines. With the help of these guidelines, we can easily write down the formula. ठीक है, आप formula भी लिख सकते हैं and you can easily write down the name. Name भी तो लिखना पड़ेगा. formula लिखोगे उसके बाद नाम लिख सकते हो, आप name लिखोगे. ठीक है, so this is all about the mononuclear complex. ठीक है, this is all about the mononuclear complex. Now next is the naming of mononuclear coordination compound. Naming. Now come to the naming. Formula we have done. ठीक है, so naming of mononuclear coordination compound. Naming of mononuclear coordination compound. ठीक है, now here we have to know about how to write the name. कैसे name लिखना है. ठीक है, so there are certain rules, certain guidelines to write down the name. ठीक है, सेम एज दैट टू राइट डाउन द फॉर्मूला. ठीक है, वी हैव सर्टेन रूल. द फर्स्ट इज इन द आयनिक कॉम्प्लेक्सेस, इन द आयनिक कॉम्प्लेक्सेस, वी आर टॉकिंग अबाउट द आयनिक कॉम्प्लेक्स. ठीक है, सो इन द आयनिक कॉम्प्लेक्सेस द ऑर्डर ऑफ नेमिंग इज, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल केटाइन, स्पीसीज enclosed in square bracket and then anion. This is the sequence. ठीक है, this is the sequence to write down the name. First of all, cation, then species enclosed in the square bracket, followed by anion, if any. ठीक है, followed by anion if any, मतलब अगर प्रेजेंट है तो लिखोगे, नहीं है तो नहीं लिखोगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल anion इज नॉट प्रेजेंट, नहीं है प्रेजेंट, आप फिर कहाँ से लिख के आओगे? अपनी मर्जी से नहीं लिखना है, वो तो वहां पे हमें जो फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग नहीं लिखना है. ठीक है, नाउ द सेकेंड वन इज द लिगेंड्स आर अरेंज्ड एंड नेम्ड इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ठीक है, लिगेंड्स कैसे लिखना है?
alphabetical order. They should be arranged and they should be named as a alphabetical order. ठीक है? Before the name of central metal atom. ठीक है? Before the name of central metal atom. ठीक है? This is the second one. ठीक? Now the next is, इसका ही next part है, third part. Naming of ligand. Naming of ligand. ठीक है? Naming of ligand. Now the name of anionic, neutral and cationic ligands are, the names of anionic, neutral and cationic ligands are written as follows. Anions, symbol, name of ligands. First is anion, then symbol क्या होगा और name of ligand क्या होगा. ठीक है? First is chloride, Cl minus. ठीक है? Name is chlorine or chloride. Bromine, Br minus. Bromine. Cyanide, Cn negative. Cyanide. ठीक है? This is the pattern how we name the ligands. और वो भी कैसा? anion. In case of anions, we are talking about anion. कैसे anion के केस में चलेगा? cation के लिए हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे. ठीक है? This is with the case of the anion. Oxide, that is oxide. O2 minus, oxide. Oxide, O2 minus, oxide. Amide, next is amide. N2 minus, amide. Amide के लिए क्या है? amide. ठीक है? So this is the way how we name the ligand. Anionic ligands. ठीक है? This is only for the anionic ligands. Now the next is ligands whose name end in, the ligands whose name end in या end with ITE, or ATE. The ligands whose name end with ITE or ATE, it becomes ITO. ठीक है? It becomes ITO and it becomes ATO. ठीक है? वो लिगेंड जिनका नाम किसके साथ एंड हो रहा है, अगर किसी के नाम के पीछे ITE है तो वो क्या बन जाएगा? ITO. IT
ITO में कन्वर्ट हो जाएगा नेमिंग में, ठीक है। और जिसके नाम के पीछे ATE है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATO में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दैट इज बाय रिप्लेसिंग द, दैट इज बाय रिप्लेसिंग द, क्या किया आपने इसे, इससे रिप्लेस कर दिया, इसको भी किससे रिप्लेस कर दिया, ओ से, दैट इज द डिफरेंस। बाकी हमने कुछ भी नहीं किया, रेस्ट अल्फाबेट्स आर सेम, ठीक है, सिर्फ आपने पीछे थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। अब ऐसे जो एग्जाम्पल है इनको देख लेते हैं, ठीक है। सो ITO और ATO की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो एनाइंस सिंबल एंड नेम ऑफ anions, symbol and name of ligand. Carbonate CO3 2 minus क्या बन जाएगा, कार्बोनेट, ठीक है। कार्बोनेट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोनेटो। ऑक्सलेट C2O4 2 नेगेटिव किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सलेट, लिखो नाम, इट इज ऑक्सलेट, ठीक है। नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, nitrate, it is converted into nitrate. Acetate, sulfate, क्या बन जाएगा, सल्फेट, ठीक है। सो दीज आर ऑल एनायनिक, ठीक है। एनायनिक लिगेंड की हम बात कर रहे हैं, कैसे आपने इसके नेम को कन्वर्ट करना है। नाउ न्यूट्रल लिगेंड्स, ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड्स। तो certain neutral ligands are named as the molecule while other named differently, while other are named differently. Certain neutral ligand are named as a molecule, ठीक है, while others are named differently, ठीक है। Now first heading is as a molecule, ठीक है। उस एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे एज अ मॉलिक्यूल। सो ligands and name, ठीक है। पहला हो गया लिगेंड जिसको हम एज अ मॉलिक्यूल लेते हैं, दूसरा हो गया नेम। द एग्जांपल इज C5H5N pyridine, C5H5N and name is pyridine, its name is pyridine। N2 O2 dinitrogen, dioxygen, C5H5N pyridine, N2 dinitrogen, O2 that is dioxygen, ठीक है। NH2CSNH2, NH2CSNH2 thiourea, THIO, NH2CSNH2
ठीक है. So these are the example where the ligands are named as a molecule. ठीक है, जहां पे हम ligand को कैसे नेम करते हैं, as a molecule. Now ligands which are not named as a molecule. Ligands which are not named as a molecule. ठीक है. H2O एक्वा. H2O को क्या कहते हैं, एक्वा. NH3 amine. H2O is aqua, NH3 is amine. CO carbonide. C and capital O, that is carbonide. Carbonide. So ठीक है. So there are various more examples. ठीक है. These are the some common जो generally हम use करते हैं, but there are so many examples. ठीक. Now the next rule of the nomenclature is organic free radical. Organic free radical. ठीक है. Organic free radical when act as a ligand. Organic free radical when act as a ligand are named as usual. Are named as usual. उनका नाम अब यहाँ भी वैसे ही रहता है जैसे उनका नेम होता है इकाई फ्री रेडिकल का. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल CH3. व्हाट इज CH3? दिस इज मिथाइल. C2H5. दिस वन इज इथाइल. C6H5. दिस इज फिनाइल. तो इनका नाम यहाँ भी सेम रहेगा इफ दे आर यूज्ड एज अ लीगेंड. इनका नाम यहाँ भी क्या रहेगा, सेम रहेगा.